this thing, but as a wave function का evolution in terms of size. ठीक है? So the point is that once the problem is that these become fuzzy and indeterminate. We cannot have an exact measure. We can have एक series of values. एक value नहीं. For example, हमारे पास क्वेश्चन है कि if we want to measure something position और उसका conjugate variable momentum और energy उसका conjugate variable time, ठीक है? So can we fix, अगर हम एक को fix exactly करेंगे दूसरे को भी कितना हम exactly fix करेंगे? और in the language of statistical mechanics हम कहते हैं there are different copies, ensembles. अगर कोई सिस्टम होता है जैसे ये सिस्टम है या this is a gas of molecules. So what we will do sort of जैसे इसमें 100 molecules है, इसमें भी 100 molecules हैं. So how they will randomly be, ठीक है? तो can we make an average behavior of this entire ensemble? जो different copies है, इसका evolution कहाँ होगा, इसका evolution कहाँ होगा, इसका evolution कहाँ होगा, ठीक है? If they will have same velocities almost, हम कहेंगे after 5 seconds they will have some ensemble average where each copy का evolution will be randomly equal to the separate evolution, ठीक है? This is the classical way of looking at things, जो आप Maxwell's Boltzmann distribution करते हैं. मगर since जो हमारा precision है to measure these conjugate variables, it leads us to some difficulties in that quantitative measurement of things, ठीक है? तो अब ये है कि अब मसला ये है कि so if I use the words of book, ये कह रहा है कि quantum mechanics so if I use so to make this point more precise, ये कह रहा है कि two systems that are in same quantum state, psi or phi, may be found distinct in more refined characterization. अब ये मसला ये कह रहा है कि two systems that are in the same quantum state may be found distinct in more refined characterization. Refined मतलब जैसे हम कहते हैं ना classical mechanics में. So if we make the system पे हम ज़्यादा focus concentrate करेंगे, we can exactly determine position and momentum. Exactly determine position and so you can make exact copies को हम कह सकते हैं, मतलब similar copies. अगर एक copy ऐसी है, we can make a similar copy here also. You can replicate things. But question है कि क्या quantum mechanics में हम दो systems, if they are in the same quantum state, can we make them more refined by refined measurements? But in principle वही uncertainty है, we cannot make, because the moment हम एक particle का measurement करते हैं ना, that measurement will disturb the state of the position or state of the moment of that particle. And the moment we measure the same, even though they might be in the same state, it will measure that thing in the different way. So it's not in principle possible. There are some theories, for example, Bohm's hidden variable theory, or people like Einstein, they also wanted that we should exactly measure those conjugate variables simultaneously. So that has not shown to be a separate approach to quantum mechanics. जो mainstream approach है quantum mechanics का, उसको कहते हैं हम open Hogan interpretation of quantum mechanics.
हाँ, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है एक इंटरप्रिटेशन जिसमें एक फिजिसिस्ट है जैसे श्रोडिंगर है, हाइजेनबर्ग है, बोहर है, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को जो नजरिया है ना, हाउ वी कैन सी क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम बुक्स में अक्सर पढ़ते आए हैं. सो व्हाट इज दैट इंटरप्रिटेशन? दैट इंटरप्रिटेशन इज दैट व्हिच वी हैव बीन स्टेटिंग दैट देयर इज ऑलवेज, अगर हम दो वेरिएबल्स को मेजर करेंगे इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट, वी कैन नॉट हैव प्रिसाइज मेजरमेंट both दो वेरिएबल्स, वी कैन नॉट मेक these refined characterization such that that we can measure two quantum states in the same state. ठीक है, ये है इसको. So मतलब दो हम we cannot make measurements precise enough such that we can exactly pin two particles in the same state. ठीक है. So there is always some uncertainty which was shown by like this. For example, अगर दो पिन होल्स में हम जैसे अगर हम लाइट में लाते थे, इफ वी हैड टू पिन होल्स ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू गेट लाइक दिस, है ना, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा. ठीक है. बट अगर हमारे पास अब इट्स नॉट फोटॉन्स, इफ वी टेक क्वांटम पार्टिकल लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक इलेक्ट्रॉन्स, सो स्टिल वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक पिन होल को वी आर गोइंग टू allow only light from this, ठीक है, still we'll get interference patterns, dark spot, light spot. But the point is the moment we will make this pinhole थोड़ा सा इसका जो है ना, make it smaller and smaller, smaller and smaller. So this means we will allow only few particles to enter this. But we'll see जो हमारे पास interference pattern यहाँ screen पे आता है ना, it doesn't go bright and light spots नहीं आते. So when we made it, इस pinhole को हमने कम किया, इसका मतलब कि less number of particles are travel, individual particles will travel. This means we are concentrating on the particle aspects of the things. इसको when we make the pinhole, उसका length कम करते हैं, कुछ कम particles आएंगे. So as stage will come, only one particle will come. This means we are only concentrating on the particle aspects. So जब हम particle aspects को emphasize करेंगे, हम देखेंगे जो screen पे हमारा जो interference pattern नहीं आ रहा, वही है. The moment we concentrate on the measurement of the particle aspect of the quantum particle, we are not able to register the wave aspect with that precision. अब अगर इस pinhole को हम ज्यादा करेंगे तो we'll try to understand these quantum particles as waves, ठीक है? But you can get the impression out here, the interference pattern or superposition pattern, ठीक है? So this is known as known as what I should say here. So we can say quantum mechanics contains that wave function contains maximum amount of, अब ये wave function जो है, so not जो हमारी state है, it is represented by psi, and psi will determine the state of the function, maximum state of the function, allows us to behave, which will include हमारे electrons, quarks, protons जो भी हैं हमारे पास. ठीक, अब हम करेंगे काम, we are going to do one important thing, motion of the wave packet. जो हमें wave packet है, जो wave packet हमारे पास है, so we are going to study it. जिस तरह हम करते हैं ना, जैसे कोई पार्टिकल है, इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, या ऐसे ही चलेगा, ठीक है? सो यू शुड बी एबल टू लोकेट कि कहां से कहां तक गया. इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालते हैं ना. अब सिंस वी हैव रिप्लेस्ड पार्टिकल बाय समथिंग कॉल्ड psi, स्टेट, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट. अब क्वांटम मैकेनिकल स्टेट क्या है? इट्स दोज वेव पैकेट्स का स्प्रेड, which is unique composition of wave and particle properties का unique mix, ठीक है? अब उसका स्प्रेड कैसे होगा स्पेस टाइम में? psi of x t क्या होगा? जैसे 5 मिनट के बाद कहाँ होगा, 10 मिनट के बाद कहाँ होगा, ठीक है? So that will basically say कि मतलब जो elementary particles हैं, quantum mechanical particles हैं, whether they are electrons, protons, है ना? If world is ultimately quantum mechanical, उसका evolution कैसे हम study करेंगे? The way we study f is equal to m, है ना?
अब ये है कि थोड़ा सा इट कंस्ट्रेन्स और आपके दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा इमेजिनेशन पे, क्या करेगा. In the first stage, you have to see the rules while you are learning quantum mechanics. Calculate कैसे करेंगे, है ना. फिर धीरे धीरे you get the intuition. तो again we are going to use हमारे पास जो कल हमारे पास we had used the idea of Fourier analysis. ठीक है. अगर हमारे पास Fourier analysis, so we are going to use three dimensional Fourier wave x, y, z, t. हमने कल कहा था z and y and z are suppressed. You only take one dimension. So if you take how this wave function, उसका spread कैसे होगा in space and time. अब time can be zero, means initial condition. It's the particle has started, the quantum mechanical particle has started. So इसको हम ऐसे भी represent कर सकते हैं. Psi x, y, z 0. So psi of r 0, it's equal to 2 pi. So ये कल मैंने कहा था how we can have propagation vector d3 की means 3 dimensional. d1 की हो गया x, dx, dy, dz. तो it's in momentum space, it's d3 dx, dy, dz, है ना. इसको dk1, dk2, इसको हम 3 डायमेंशन में पूरे स्पेस में 3 डायमेंशन. अब ये है वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस टी. कल हमने कहा हाउ कैन रिप्रेजेंट दिस विद दिस नॉर्मल स्पेस विद द उसका जो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 5 इन टर्म्स ऑफ साइन, so it will come out to be ये माइनस आएगा. So we have not to fear about it. It's basically how we represent a given wave function, given state in Fourier space and inverse Fourier space. Fourier analysis is nothing. It's how waves का कैसे description होता है जो मैंने कल कहा. अब since we are representing this quantum mechanical wave in terms of psi, in terms of wave packet, this integral हमारे पास becomes helpful. अब हम काम करेंगे, what we are going to do is that so हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा, if the wave function अपना जो ये है in terms of this thing, it can be written as iota k dot r minus omega t. असली जो हमारे पास ये है. So if you don't take time, the wave equation is like this, but we are taking the time is equal to 0, t is equal to. So if we take a general wave function psi, which is represented by this thing, so how we are going to see what coordinate, this coordinate delta x, delta y, delta z, and phi goes sensibly from 0 to kx lies in the range delta kx, delta ky, delta kz. So हमारे पास जो conjugate relations होंगी, delta x into delta k is greater than 1, delta y into delta k is greater than 1, delta z into delta k is greater than 1. ये delta x क्या है? ये है position. डेल्टा के क्या है? k is 2 pi by, ये है ना नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाई कितनी वेवलेंथ आई इसमें. अब वो वेव स्प्रेड है which is known, उसके पास देयर आर 2 ways of knowing it. एक इसका पोजीशन स्पेस में इसका क्या वेरिएबल, कोऑर्डिनेट स्पेस में कोऑर्डिनेट क्या है, एंड इसका प्रोपेगेशन क्या है. ठीक है. तो अगर प्रोपेगेशन ज्यादा है तो दिस they are in inverse relation such that delta x is 1 by delta kx. So अगर वेव नंबर ज्यादा आएगा तो 2 pi by lambda will increase, this will decrease. अगर ये increase होगा so the wave will spread. So we will not be able to locate exactly where this is. अगर वेव डेल्टा प्रोपेगेशन ज्यादा होगा, वेव स्प्रेड. ठीक है. सो हमारे पास पोजीशन एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन करेंगे, इसका पोजीशन यहाँ है इन द क्लासिकल सेंस.
बिकॉज इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होगा। सो दिस अब यही है इस जो वेव पैकेट का इवोल्यूशन है इन स्पेस टाइम। वी आर गोइंग टू टेक इफ यू रिकॉल योर, हम किसी भी फंक्शन को एक टेलर सीरीज से कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। यू आर गोइंग टू टेक कोई फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक जो उसका वेव फंक्शन का स्प्रेड, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर साइड दैट जो लिमिटिंग केस होगा वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा फॉर एन अप्रोक्सीमेट सेंस। But once we take higher order derivatives, means two waves are packets are superposing. So how can we describe the state of the particle? ये हमारा काम है। So for that, so if we want to write this omega here, omega को हम in terms of अगर हम लिखेंगे इसकी फर्स्ट टर्म प्लस k माइनस k बार है ना, ये फैक्टोरियल आप करते हैं डेल्टा ओमेगा k इज इक्वल की बाई फर्स्ट टर्म होगी, फिर सेकंड टर्म होगी। तो विल नॉट टेक दिस k माइनस k बार बाय 2 फैक्टोरियल स्क्वायर k माइनस k बार। सो विल टेक फर्स्ट फ्यू टर्म्स हियर साइड दैट जो हमारे पास साई है, साई एज अ वेव फंक्शन, साई इसकी डिपेंडेंस rt पे होगी। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ यहां पर q डॉट, तो ओमेगा के बदले हम लिखेंगे we are going to write this term and this term, first two terms we are going to write, we are not going to take higher order terms, ठीक है। evolution under first few terms, तो we are going to substitute this omega k को हम यहाँ substitute करेंगे here। so psi that जो psi r को हो हम if we want to write it in terms of so it will be iota omega t plus iota, देखो यहाँ पर दो टर्म है k minus k, first term will be this k dot delta omega t psi of, sorry ये नीचे यहाँ से ये psi of r minus delta k omega t 0। so you can see it, ये है ना, यहाँ पर we are going to write omega के बदले आप लिखोगे ये, omega के बदले आप लिखोगे this। So you can write it like this is the first term, this is the second term। तो second term में पहली वाली term आएगी ये and multiply करके आएगी ये वाली term, ठीक है। From this we have done nothing, we have substituted this here, ठीक है, Taylor first two terms। So if we write it this way, so if we want to say so without changing the shape, अब shape है ना, you want to physically visualize wave पैकेट का evolution क्या आएगा, ठीक है। so ignoring the phase factor we can see what side that vg इसको जो group velocity है it will be this is delta किसके बराबर, delta is basically d by dx of d by d by of d by, है ना, इसी को हम ग्रेडियंट से डिनोट करते हैं। सो स्पेस डेरिवेटिव x डायरेक्शन में कितना चेंज हो गया, y डायरेक्शन में कितना चेंज हो गया। सो इफ यू सप्रेस y एंड z विल से फर्स्ट डेरिवेटिव d by dx, फिर आएगा टेलर सीरीज में सेकंड d2x by dx स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसका ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट विल बी डिनोटेड बाय दिस। साइड दैट वी कैन आल्सो राइट, अगर हम इसको बोथ साइड से m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वी कैन राइट इट डेल्टा g ओमेगा इज इक्वल टू vg, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, इट विल बी सो mv g। सो इसको आप इफ यू वांट टू राइट p इज इक्वल टू hk, p इज इक्वल टू hk, तो mv है ना hk बराबर। सो इफ यू वांट टू मेक दिस सब्स्टिट्यूशन यू कैन राइट खाली ओमेगा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं h ओवर, तो अगर आप एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे ना ये h ओवर m आएगा,
ये हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एच की लिखा, तो ओमेगा को आप यहाँ इंटीग्रेट करो, इट विल बी एच ओवर एम। के को आप इंटीग्रेट करोगे, इसका प्रोपेगेशन है अलोंग एक्स वाई एंड जेड, के एक्स का इंटीग्रेशन आएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, के वाई का आएगा के वाई स्क्वायर बाई 2, के जेड स्क्वायर बाई 2। सो इट विल बी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, सो 2 विल बी हियर, सो प्लस कांस्टेंट। और if we multiply both sides by h, it will be h omega, ये h स्क्वायर बाई 2m आएगा, इसको आप राइट इट के एक्स स्क्वायर, के इसको के स्क्वायर से डिनोट करेंगे, प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट कैन यू कैन राइट इट एज ए पोटेंशियल एनर्जी और v इसको रख सकते हो। तो k के बदले आप लिखो इन टर्म्स ऑफ k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा को h ओवर m में करो ट्रांसलेट, सो इट विल बी p स्क्वायर बाई 2m प्लस v, इट्स h ओमेगा। सो p स्क्वायर बाई 2m प्लस ये किसके बराबर है, काइनेटिक प्लस, सो इट्स e इज इक्वल टू, सो ये इक्वेशन आपने कहीं देखी है? So it's a sort of the equation of Planck's law, Planck's, and how we can say energy कैसे, how energy gets transmitted. अब इसमें ये है कि so the point is so we have in the limiting cases found that जो energy transfer होता है, energy होता है, it comes in the famous that Planck's law। अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज कर रहा है, जो हमने यहाँ पर टर्म्स ली ना, फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स, वी हैव इग्नोर्ड वेव पैकेट जो है उसकी सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर टर्म। सो इफ वी आर गोइंग टू इंक्लूड दो सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स, जो हमारा वेव स्प्रेड है which represents that quantum particle का स्टेट, ठीक है, वो वैसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। सो टू हैव अ bird's eye view of it, which I'll then stop. So how, if we are going to, for limiting cases, हमने कहा कि it will represent the way we have this Planck energy exchange comes in like this. But if we are going to include higher order terms in that wave spread, ठीक है, higher order terms in that wave spread, तो क्या आएगा, इसका बिहेवियर क्या आएगा? higher order term means ओमेगा k जो है हमारे पास, इसका अपना है फर्स्ट ऑर्डर टर्म h स्क्वायर बाई 2m, दूसरी वाली टर्म आएगी h k बाई 2m, पहला आएगा k माइनस k बार, दूसरा आएगा h बाई 2m k माइनस k बार स्क्वायर, है ना, टेलर सीरीज की फर्स्ट ऑर्डर टर्म, सेकंड ऑर्डर टर्म और हम पहली दो टर्म्स लेंगे। सो इफ यू टेक फर्स्ट टू टर्म्स हियर and if you only consider one dimensional wave packet, just given the and such that ky kz को हम 0 के बराबर रखेंगे, we are assuming that wave packet जो उसका propagation only in the x direction, we will take it only in the x direction, then जो उसकी second term होगी, so it will be, so first term तो हमको पता ही है, it will come out to be this. So if we take the second order term, ये वाली term, it will come out to be h over 2m. इसको हम in terms of kx minus k bar, we will take some mean value जो हम कर रहे हैं, हमने कल किया था ना spread over kx minus k bar को हम we are going to represent it by delta kx square. It's propagation of this along some mean, उसका square will give this contribution. अब देखो यहाँ पर आप one thing is interesting, which then I'll stop. The interesting thing is that
जो डेल्टा टी है हमारे पास, अगर हमारे पास ये है ना टी, सो टी शुड ऑलवेज बी लेस देन एम एच बाय डेल्टा पी एच स्क्वायर. तो अगर t का वैल्यू अगर ये t का वैल्यू कम होगा बहुत, ठीक है, यहाँ पर, सो देन जो हमारे डिनोमिनेटर है, सो इट विल कम आउट बी दिस इक्वेशन विल सॉर्ट ऑफ होल्ड. फॉर एग्जांपल, सो फ्रॉम दिस यू कैन से, जो हमारे पास डेल्टा t है ना, डेल्टा t इज बेसिकली, हाँ ये m यहाँ लाओ, हाँ m h, हाँ m h, हाँ m h multiplied. So if the equation is like this, if the value of t comes out to be very small, then this will, for small spreads, और इसी equation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, delta t into, this is another way of writing it, is like this. So you can verify it at your place. So दो चीजें हमको आ रही हैं. We have got, if you take second order terms, if the value of t is very small, so you can neglect the contribution of second order term. अगर ये delta t है ना very small, so it will come out to be, you can neglect it. So the wave spread will be linear. दो wave states अगर superpose करेंगे, जो wave packet होगा ना, you can find it. अगर second order term t becomes very large, तो जो wave spread है delta x, it will be very large. आप उसकी exact position आप locate नहीं कर पाओगे. तो wave packet है ना, इसका range बाहर जाएगी. जो ये हमने relation रखा था ना, delta p into delta k is 1. Propagate delta x into delta k is 1. Delta k x into delta k is 1. Greater than or equal to 1. तो propagation and x. So अगर ये number of waves small होते हैं, तो उनके exactly से wave packet क्या है. मगर अगर यहाँ का हम second order term हम लेंगे ना, तो t will come out to be large. This means जो we are not going to exactly measure the position of that कहाँ पर है, in the classical sense of the word. Classical way में हम position नहीं measure कर सकते हैं. So the wave will start from t goes to minus infinity, which is a remote future, and then goes to plus infinity. The wave packet will first contract, then eventually spread. So even though those superposed waves जो होंगे, अगर first order terms लेंगे, तो we can exactly find delta x, delta p. But if the wave has started from infinity and it's going to move to infinity, so ठीक है, for some small time, if you only take the first order this consideration, you can look. So if you are not going to take the higher order terms into consideration, it is as if it has come from infinity, spreading. Then for small time it will remain like this. Then again it's going to evolve. Okay. So this is a sort of. It becomes थोड़ा सा ही है. You have to concentrate some more time how evolution of a quantum state in terms of wave packets. This was it. Okay.